This visualization shows a high-pressure liquid reversing its direction and aggressively forcing its way backward through a pipe. In an industrial plant, this is a severe hidden threat, a physical connection between a highly hazardous process line and a benign utility system. We call these service-to-process, or STP, interconnections. They are the junctions where utilities like plant air, nitrogen, or steam are injected directly into active chemical processes. This standard P&ID schematic illustrates the first primary failure mode, process overpressure. Here, a sudden spike in the active process pressure overwhelms the utility line. The pressure differential flips, and the hazardous fluid pushes backward into the utility header. Alternatively, the utility system itself can fail. If the plant air or steam header experiences a sudden pressure drop, it creates a vacuum. The schematic now shows this siphon effect, pulling the process chemicals backward, even under normal operating pressures. The engineering challenge is strict. Systems with vastly different hazard profiles must interact to keep the plant running, yet material flow must remain absolutely unidirectional. Relying on a standard check valve to enforce that one-way flow is a dangerous operational assumption in a high-stakes environment. True isolation requires translating the exact chemical hazard severity into a mathematically rigorous layout of redundant hardware. Guaranteeing one-way flow means calculating and engineering against inevitable mechanical failures, rather than trusting a single physical barrier. A widespread misconception on the plant floor is that a single non-return valve, or NRV, provides absolute isolation. This document highlights API Standard 598, which governs valve inspection and testing. It explicitly states that metal-seated check valves permit a specific rate of leakage. Looking at this cross-section diagram of a closed metal-seated check valve, you can see the mechanical reality. Even when the valve is fully engaged and functioning properly, microscopic fluid bypass occurs around the seat. Over sustained periods, this micro-leakage accumulates. If the process line contains highly toxic or reactive chemicals, this slow accumulation contaminates the upstream utility header, turning a safe service line into a severe hazard. The required countermeasure is hardware layering. Engineers install multiple check valves in series and mandate they be of dissimilar types, like a flapper valve paired with a spring-loaded piston, to prevent a common mode failure from disabling the entire defense. Because individual hardware degrades and leaks by design, process safety relies on an engineered web of redundancy. This grid represents the Appendix F matrix, the mandatory architectural framework that dictates exact hardware requirements based on 3 specific chemical hazard classes. The matrix categorizes protection into 2 types of hardware. First are manual devices. These are standard block valves that require direct human intervention to isolate the flow. This compares manual block valves against non-manual devices, which operate independently and fail safe closed. Notice that when placed in series, non-manual check valves must be mechanically distinct. Dissimilar valves ensure a single condition, like debris or chemical fouling, won't cause both to fail simultaneously. The matrix assigns an exact ratio of manual to non-manual devices required to secure the line, based on the hazard level. Isolating an STP connection means converting the biological and chemical threat of a specific material into a physical mathematical hardware layout. This expanded row details Type 3 hazards, low to moderate risks involving substances like dilute solutions, solids, and polymers. For a Type 3 hazard, the procedure mandates a minimum of 2 total devices, with at least 1 being non-manual. This configuration balances 1 automatic failsafe to prevent backflow during active operations with 1 reliable manual isolation point for routine maintenance. This next row details Type 2 hazards, moderate to high-risk materials like flammable liquids, strong corrosives, and highly reactive substances. Despite increased danger, the hardware requirement is exactly the same: 2 total devices, at least 1 being non-manual. While the physical layout is identical, the administrative burden shifts. Type 2 connections demand highly stringent process safety management testing, frequent inspections, and rigorous documentation. Even at the lowest echelons of industrial risk, single-point mechanical failure is unacceptable. Dual-layer protection forms the absolute baseline. This row covers extreme Type 1 hazards like benzene. For process overpressure, rules dictate a 3-device sequence: 1 manual block valve and 2 non-manual check valves.
If the only failure mode is a loss of service pressure, the requirement drops to 2 total devices. That triple-layer design for overpressure exists specifically to combat the API 598 micro-leakage allowances found in metal-seated valves. Positioning 2 dissimilar non-manual valves in series guarantees automatic isolation, even if the primary seat suffers from that allowable micro-leakage or severe chemical fouling. With acute toxins, a minor operational incident immediately threatens fatal exposure. The hardware matrix reflects that reality by demanding a sequence that physically cannot fail. There are 2 absolute exceptions that bypass this standard 3-type risk assessment entirely: potable water and breathing air. This extended schematic shows the mandatory setup for these systems, a minimum of 4 devices, requiring at least 2 to be non-manual, regardless of process pressure or engineering calculations. These specific utilities connect the chemical plant directly to the internal biology of the human operator, whether through safety showers, tap water, or breathing apparatuses. There is strictly 0 acceptable risk tolerance and 0 permissible leakage rate when dealing with these 2 biological streams. When human consumption is the endpoint, probability calculations and hazard analyses are abandoned in favor of maximum possible mechanical defense. This macro footage illustrates the reality of industrial operations. Over time, all physical hardware is subjected to entropy, gathering corrosion and seizing up. During a backflow event, utility check valves are suddenly exposed to aggressive process chemicals. These are chemicals the utility hardware was never designed to handle over the long term. To combat this degradation, facilities require documented mechanical integrity function testing for all safety-critical STP connections. This diagram shows one of the authorized verification methods. Using strategic vent and bleed valves, technicians can perform an in-place pressure integrity test. Other methods include internal inspections or total hardware replacement. An STP matrix is only theoretical on paper. In the field, hardware is only as reliable as its most recent successfully documented function test. This Appendix E STP field tag represents the final administrative layer that holds the system together. Every connection requires precise field tagging and strict management of change procedures, especially when temporary connections are made. Mastering service-to-process risk requires both the strict architectural logic of the hazard matrix and the unrelenting vigilance of process safety management. Unidirectional flow is a highly unnatural, engineered state. It must be forcefully maintained to protect the facility and its personnel from invisible, catastrophic backflow. नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंडस्ट्रियल सेफ्टी की एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो आमतौर पर हमारी नज़रों से छिपी रहती है। जी हाँ, वो सिस्टम जो विशाल इंडस्ट्रियल लेवल पर होने वाले बड़े-बड़े केमिकल हादसों को टालते हैं। आज हम एक बेहद टेक्निकल और अहम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि आखिर खतरनाक रसायनों को सुरक्षित लाइनों में बैकफ्लो होने से कैसे रोका जाता है। इस खतरनाक केमिकल बैकफ्लो के खिलाफ जो अभेद्य सुरक्षा चक्र बनाया जाता है, उसे समझने के लिए आज हम कुछ खास पहलुओं पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि ये अदृश्य इंडस्ट्रियल खतरे क्या हैं, वो कौन से अटल नियम हैं जिनसे कोई समझौता नहीं होता, रसायनों को कैसे कैटेगराइज किया जाता है, टेम्पररी इंटरकनेक्शन का मैनेजमेंट कैसे होता है, और सबसे ज़रूरी बात, इन सब की सख्त इंस्पेक्शन कैसे की जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे अहम बिंदु से, वो खतरा जो दिखाई नहीं देता लेकिन पल भर में तबाही मचा सकता है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी का सबसे बुनियादी उसूल आखिर है क्या? यही ना कि उन खतरों को भांपना और बेअसर करना जो आंखों से ओझल रहते हैं। इसे ही तकनीकी भाषा में बैकफ्लो कहते हैं। मतलब जब सप्लाई लाइनों में प्रवाह अचानक से उल्टी दिशा में बहने लगे। जरा सोचिए, सुरक्षित पानी या हवा देने वाली पाइपलाइंस में अगर किसी वजह से टॉक्सिक केमिकल्स वापस घुस जाएं, तो वो पल भर में कितनी बड़ी जानलेवा स्थिति पैदा कर सकते हैं। अब ये मैकेनिकल फेलियर असल में 2 तरीकों से हो सकता है। पहला है प्रोसेस ओवर प्रेशर, जहां केमिकल प्रोसेस का दबाव इतना बढ़ जाता है कि वो फ्लूइड्स को जबरदस्ती पीछे की तरफ धकेल देता है। और दूसरा तरीका है लॉस ऑफ सर्विस प्रेशर, मतलब जब यूटिलिटी लाइन का दबाव अचानक गिर जाए और टॉक्सिक फ्लूइड्स किसी वैक्यूम की तरह अंदर खिंचे चले आएं। दोनों ही स्थितियां बेहद खतरनाक हैं। हम आते हैं हमारे अगले पड़ाव पर, वो नियम जो अनिवार्य हैं और जिनसे प्लांट फ्लोर पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। ये असली वार्निंग टैग देखिए।
ये महज एक निर्देश नहीं है, बल्कि एक अटल नियम है। किसी भी केमिकल प्रोसेस का कनेक्शन सांस लेने वाली हवा के सिस्टम्स के साथ सख्ती से वर्जित है, बिल्कुल बैन। ये सीधे तौर पर जानलेवा जहरीलेपन को रोकने का पहला, सबसे कड़ा और सबसे अहम कदम है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। मान लीजिए किसी बहुत ही रेयर सिचुएशन में साइट प्रेसिडेंट की तरफ से सांस लेने वाली हवा या पीने के पानी के कनेक्शन की कोई विशेष इजाज़त मिल भी जाए, तो पता है क्या होता है? वहाँ कम से कम 4 बैकफ्लो प्रिवेंशन डिवाइस लगाना अनिवार्य हो जाता है, पूरे 4, ताकि रिस्क का मार्जिन 0 हो जाए। हवा और पीने के पानी के लिए बनाए गए ये दोनों टैग्स असल में कोई साधारण चेतावनी नहीं है। ये एक आखिरी ठोस रुकावट हैं, एक फिजिकल बैरियर जो ये पक्का करते हैं कि प्लांट में काम कर रहे वर्कर्स जिस हवा में सांस ले रहे हैं और जो पानी पी रहे हैं उसमें किसी भी हालत में जहरीला संक्रमण न पहुंच सके। तो अब सवाल आता है कि हम इन अलग अलग केमिकल खतरों को कैटेगराइज कैसे करते हैं और उनके लिए सुरक्षा घेरा कैसे तय किया जाता है। इस चीज को सिस्टमैटिक बनाने के लिए इंजीनियर्स ने एक पूरा हैजर्ड मैट्रिक्स तैयार किया है। ये बेहतरीन मैट्रिक्स हमें साफ तौर पर दिखाता है कि खतरे का लेवल जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हमारी सुरक्षा की परतें और बैकफ्लो डिवाइस की संख्या भी बढ़ती जाती है। टाइप 3 के कम खतरे वाले पॉलीमर्स से लेकर टाइप 1 के अत्यधिक जहरीले पदार्थों तक हर चीज का एक पक्का प्रोटोकॉल है। खासकर टाइप 1 हैजर्ड्स की बात करें तो ये कोई आम खतरे नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं शक्तिशाली कार्सिनोजेंस, सीधे संपर्क से होने वाली एक्यूट टॉक्सिसिटी और बेंजीन जैसे खतरनाक पदार्थों की। इसीलिए ऐसे खतरों से निपटने के लिए 1 या 2 नहीं बल्कि कई स्वतंत्र और मजबूत परतों वाले डिफेंस सिस्टम की सख्त जरूरत होती है। और यहीं पर एक बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग सिद्धांत काम आता है जिसे फेल सेफ कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बैकफ्लो रोकने वाले वॉल्व हमेशा इस तरह डिजाइन होने चाहिए कि अगर पावर कट हो जाए या सिस्टम टूट जाए तो उनका डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म तुरंत वॉल्व को बंद कर दे, ताकि खतरा वहीं का वहीं कैद हो जाए और आगे न बढ़ पाए। चलिए अब थ्योरी और इंजीनियरिंग डिजाइन से निकलकर ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं, यानी प्लांट की फ्रंट लाइन्स पर, जहां रोजमर्रा के टेम्पररी कनेक्शंस किए जाते हैं। जब भी फील्ड में कोई भी टेम्पररी कनेक्शन चालू करना होता है तो शिफ्ट इंजीनियर्स को एक बेहद सख्त चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ती है। इसमें उपकरण को आइसोलेट करना, उसका प्रेशर कम करना, ड्रेन करना और होज को पूरी तरह से सुरक्षित करना शामिल है। ये कोई ऑप्शनल काम नहीं है, बल्कि एक पक्की साइंस है जिसे हर बार बिना चुके फॉलो करना होता है। सब कुछ शुरू होता है एक सुरक्षित और स्टैंडर्ड सर्विस सप्लाई हेडर से, चाहे वो नाइट्रोजन लाइन हो या कोई और यूटिलिटी। किसी भी फ्लो को सुरक्षित रूप से ट्रैक करने और इस जटिल नेटवर्क को नियंत्रित करने का ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। और इन अस्थायी ऑपरेशंस के दौरान जो असली हीरो होते हैं वो हैं ये हाईली इंजीनियर्ड स्पूल फिटिंग्स और नॉन रिटर्न वाल्व या NRVs। मेंटेनेंस टीम इन्हें बहुत ही बारीकी से तैयार करती है। यही वो वाल्व्स हैं जो किसी भी खतरनाक रिवर्स फ्लो के सामने भौतिक रूप से एक अभेद्य दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। अब इतनी सारी सेफ्टी डिवाइसेस लगा तो दी, लेकिन क्या हम आंख बंद करके इन पर भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमारा आखिरी और सबसे क्रिटिकल स्टेप है इंस्पेक्शन। सिर्फ ये मान लेना काफी नहीं है कि मुसीबत के वक्त वॉल्व अपने आप काम करेगा ही। इंजीनियर्स इसकी बारीकी से फंक्शन टेस्टिंग करते हैं। या तो पूरी तरह से रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है या फिर अंदरूनी स्प्रिंग्स की गहरी जांच होती है। कई बार उसी जगह पर ब्लीड वॉल्व से टेस्टिंग की जाती है या फिर प्रेशर इक्विपमेंट के साथ बाकायदा शॉप टेस्टिंग होती है। हर एक वॉल्व को खुद को साबित करना पड़ता है। दरअसल सुरक्षा को 100% पक्का करने के लिए 2 अलग अलग तरह की टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती हैं। पहला है इंटेग्रिटी इंस्पेक्शन, जिसमें यह परखा जाता है कि क्या पाइप बिना लीक किए खतरनाक दबाव को झेल सकता है। और दूसरा है फंक्शन टेस्टिंग, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि वाल्व के अंदर का मैकेनिज्म सही वक्त पर रिवर्स फ्लो को ब्लॉक कर भी रहा है या नहीं। इन सबके ऊपर आता है प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट यानी PSM का फ्रेमवर्क, जिसके तहत पूरी जवाबदेही तय होती है। इसके मुताबिक प्लांट में हर एक सेफ्टी क्रिटिकल कनेक्शन की एक प्रमाणित और ऑडिटेबल इंस्पेक्शन हिस्ट्री होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार लगा दिया और भूल गए। इसकी शुरुआत आमतौर पर 1 साल के बेसलाइन टेस्ट इंटरवल से होती है।
तो आखिर में एक बार ज़रा सोचिए, इन बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स में रोज़मर्रा के लगातार चलने वाले ऑपरेशंस और एक भयानक तबाही के बीच ऐसी कितनी अदृश्य और परफेक्ट मैकेनिकल परतें खड़ी हैं। हम और आप शायद इसे कभी देख ना पाएं, लेकिन ये शांत और बेहद सटीक प्रोटोकॉल्स ही हैं जो मॉडर्न इंडस्ट्री की धड़कन को हर दिन सुरक्षित रूप से चलाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हमारे साथ इस सफ़र पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।